Hello students, this video is for grade LKG, so let us start. In this sheet, we are going to read 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects. English, Maths and EVS. Let's get started with our first subject of the sheet, English. The question says, look at the picture given below and write the correct missing letter. What we have to do is, we have to recognize the picture and fill the missing letter. Okay, पहले तो पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है और फिर देखना है कि उसकी स्पेलिंग में कौन सा लेटर मिसिंग है, उसको फिल करना है. लाइक यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर, एंट, ANT, एंट. सो विच लेटर इज मिसिंग इन द स्पेलिंग? A. Yes, so what we will fill? A. It will be ANT, ant. See the next picture. It is of a pot. Pot बना हुआ है. What is the spelling of pot? POT. Pot. POT, pot. So the last missing letter is pot. T. Okay, that is T. See the next picture, pen. Okay, pen की picture है. What is the spelling of pen? PEN. Understood? So in this way you will recognize the pictures and on that basis you will fill the correct missing letter. Now let's move to the next section. Next question of the sheet. Circle all the vowels. In this what we have to do? We have to circle all the vowels. सारे vowels को circle करना है. So as we all know there are 26 alphabets in English. English में 26 alphabets होते हैं जिसमें से 5 vowels हैं और 21 consonants हैं. What are these 5 vowels? A, E, I, O, U. These all are vowels and except these 5 all are consonant. इन 5 को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? Consonant हैं. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Okay, so these all are consonants. तो क्या करना है? हमें सारे वॉवल्स को सर्कल करना है. AEIOU. यहाँ पे जितने भी वॉवल्स आपको दिखते हैं इन्हें सर्कल करना है विद द हेल्प ऑफ कलर और पेंसिल. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स रिवाइज A to Z with one words. Speak with me. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for hen. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lion. M for monkey. N for nose. O for owl. P for parrot. Q for
queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for Xmas tree. Y for yacht. And Z for zebra. So we have read A to Z with 1 words. Now let's move to the next section of the sheet, maths. Join the dots and color the picture. Write the name of the picture in the given box. In this एक पिक्चर बनी हुई है बट वी हैव टू कंप्लीट इट बाय जॉइनिंग द डॉट्स. ओके, पिक्चर इज ड्रॉन, पहले से पिक्चर बनी है, हमें इसे कंप्लीट करना है डॉट्स को ज्वाइन करके. और डॉट्स कैसे हम ज्वाइन करेंगे? नंबर वाइज. ओके, नंबर वाइज ज्वाइन करेंगे. 1 2 3 4 5 6. ओके, लाइक दिस नंबर वाइज हम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे. एंड आफ्टर दैट व्हाट पिक्चर वी विल गेट? पिक्चर ऑफ अ केक. C A K E, cake. So what we will do? We will write the spelling of cake. C-A-K-E, cake. And how we will join the dots? Number wise. 1 to 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30. Okay, so in this way you will join these dots. Now let's move to the last section of the sheet, EVS. Write the name of color. You can see so many hearts are drawn in which the color is filled. Okay, बहुत सारे हार्ट शेप ड्रॉ है और इसमें कलर फिल है. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट द नेम ऑफ कलर. यहाँ पे जो भी कलर है उसका नेम राइट करना है. द फर्स्ट कलर इज, आइडेंटिफाई कौन सा कलर है, पहचानिए. इट इज ब्लू. B L U E, blue. Next is green. G R E E N, green. GREEN, green. Okay. Next is red. R E
D. Red. Understood? In this way what you will do, you will write the name of colors. इस तरीके से आप सारे colors के name write करेंगे. And also you learn these spellings. Okay? इन spellings को आप learn भी करेंगे. How will you write? First letter will be capital and the other will be small. पहला letter capital write करेंगे, उसके बाद के letters को small write करेंगे. Do this sheet in neat and clean handwriting. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt, you can ask me. Thank you.